हेलो क्लास, आवाज आ रही है? हेलो हेलो क्लास, आवाज आ रही है मेरी? सपना, हेलो। बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। Okay, so today we will discuss about telnet. Clear? यस सर। Okay. So first of all, telnet को समझने से पहले हमें ये समझना है कि टेलनेट एग्जैक्टली किस उसमें आता है। तो ये किस तरह से हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में एक वर्चुअल सर्किट्स होते हैं, वर्चुअल कनेक्शन। क्लियर? तो उसका ये पार्ट है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो वर्चुअल जो सर्किट होती है उसमें हम लोग ये टेलनेट का पार्ट कवर करते हैं वर्चुअल कनेक्शन के अंदर। और before going to discuss, first of all we need to understand what is the full form of this telnet topic, basically telnet, which is covering in this lecture we have here. So telnet exactly हमारा क्या होता है? This is a teletype networking है basically. ये this is a teletype network. इसमें मेन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट या मेन प्रिंसिपल इसका ये है कि इसको हम लोग एग्जैक्टली जो यूज करते हैं वो हमारा जो रिमोट सर्वर से कनेक्ट करने के काम आता है। जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर सिस्टम है, इफ यू वांट टू कनेक्ट इट विद द रिमोट सर्वर, क्लियर? So we exactly require the telnet. Clear? So if you talk about the introduction part, as you can see on the screen here, so where the TCP protocol make it possible to connect the remote computers, so the telnet protocol make it possible to use them. ठीक है, बेसिकली टीसीपी प्रोटोकॉल आप सभी को पता है, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है, that used to connect to the remote computers. So telnet protocol के थ्रू एक कंप्यूटर रिमोट सर्वर से कनेक्ट हो सकता है या रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है। क्लियर? सो द टेलनेट प्रोटोकॉल ऑफर्स ए यूजर द पॉसिबिलिटी टू कनेक्ट एंड लॉग ऑन टू एनी अदर host in the network from user's own computer by offering a remote log on capability. क्लियर? सो इसमें ये भी फायदा है कि एक यूजर के पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि कनेक्ट होने की एंड लॉग ऑन करने की टू एनी अदर होस्ट पे, किसी भी नेटवर्क में। क्लियर? तो वो रिमोटली एक्सेस कर सकता है किसी भी सिस्टम को जो कि अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेस है, वहां से अगर कोई हमारा यहाँ वहां बिलोंग नहीं कर रहा उस नेटवर्क में और बियॉन्ड दैट नेटवर्क है, तो इट कैन रिमोटली एक्सेस दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर और होस्ट। क्लियर? तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हमारे टेलनेट सिस्टम का। So historically, we can say it is implemented in 1969. First come in the picture, that is 1969, and it was first TCP/IP application and still is widely used as a terminal emulator. Here, so today, while the applications are more and more equipped with the graphical user interfaces, so the terminal-based applications are becoming minority among the applications. So the Telnet has found its future as a toolkit lying below several client-server software. As example, FTP, SMTP, SNMP, NNTP, STTP, as more or less dependent on the Telnet protocol.
Now, if we talk about the model of this telnet, so you can say this is a general model of this telnet. So this diagram you can see here. So for the connection, it uses basically TCP protocol. As I have earlier told you, TCP is a connection-oriented protocol. So before accessing to the remote computer, clear, it just require a TCP connection. Clear. So TCP connection जब हो जाएगा established, then it can access to the remote server. Clear. Or then we have the telnet service that is offered in the host machines TCP port 23. So this is the port of the host machines where the communication is done. Clear. So the user at the terminal interacts with the local telnet client. So the telnet client acts as a terminal accepting any keystrokes from the keyboard, interpreting them and displaying the output on the screen. The client on the computer makes the TCP connection to the host machines port 23. तो जो भी client हमारे हैं कंप्यूटर पे वो एक TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं होस्ट मशीन से एट पोर्ट 23. तो पोर्ट 23 पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं वेयर टेलनेट सर्वर आंसर्स, जहाँ पे टेलनेट सर्वर आंसर करता है जो भी रिस्पॉन्स वगैरह भेजता है. So the telnet server interact with applications in the host machine and assist in the terminal emulation. So you can see this is the basic telnet protocol prototype or model. So we have a user terminal that is connected with the telnet client here in bidirectional way, and it just establishes a TCP connection. You can see that is from the telnet server, that is the remote server basically. And this telnet server basically deal with the application related activities here. So it is just connected with the bidirectional way to the application services. So it just take the services and responds to the telnet client when required. Clear. So in bidirectional, telnet client and telnet servers are connected, though both are belonging to a TCP connection for the connection establishment as well. So as the connection is set up, so the both ends of the telnet connection are assumed to be originated and terminated at the network virtual terminal. So this is very important here. So as I have already told you that network virtual terminal is very important part here. That is exactly required for the establishment of connection here. So now if we talk about the next phase of this, clear. So the NVT exactly is what? NVT is a network wide terminal which is a host independent, so that both you can say server and the client in the connection may not need to keep any information about each other's terminal characteristics. ये भी आपको ध्यान रखना है इसके अंदर टेलनेट में जो भी होस्ट मतलब हमारे जो भी सर्वर एंड से कनेक्टेड हैं वो एक दूसरे की कोई इंफॉर्मेशन को मतलब होल्ड नहीं कर मतलब देख नहीं सकते हैं. दे कैन नॉट चेक या गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट एनीवन इंडिपेंडेंटली. वो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते या उनको इंफॉर्मेशन मिल नहीं सकती है. ये भी आपको ध्यान रखना है. क्लियर. इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म, ये एक तरह से प्राइवेसी का पार्ट है. प्राइवेसी इनकी मेंटेन रहती है. नोबडी कैन एक्सेस देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन. क्लियर. सो इट इज नॉट शेयर. As there are several types of terminal which may be able to provide additional services from those provided by NVT. So the telnet protocol contains a negotiation method for the user and the server to negotiate changes to the terminal provided in the NVT. Clear? So it just negotiate the changes to the terminal that is provided in the network virtual terminal basically, that is NVT. So typically the client and the server stays in the NVT just as long as it takes to negotiate some terminal type to be emulated. So if you talk about the options,
talk about the option. So the telnet has a set of options, and these options can be negotiated through a wide protocol inside the telnet. The negotiation protocol contains command, do, will, won't, don't, follow examples, clear, present and accept command sequences like this. Clear? So we have will is what? Will is for receiver acknowledges. Clear? Do हमारे ये सब आपकी कमांड्स हैं जो पर्टिकुलर एक मैसेज को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे will is for receiver acknowledges, do is for sender want receivers to enable the option. Want का मतलब है receiver will not acknowledge the request. Clear? So this in this fashion it uses the command. So mostly the options are used in the beginning of the connection to set up. ये जब TCP कनेक्शन सेटअप होने से पहले ही ये ऑप्शंस, ये हमारे जो भी ऑप्शंस है वो यूज हो जाते हैं. ठीक है. For the telnet, in some cases the options are changed during the session. So the key option to be negotiated is the terminal type. Clear? So this is the key option that is negotiated, that is the terminal type. Clear? So the symmetry in the negotiation protocol indicates that some loops are possible without any further restrictions. Clear? So the following sequence could take place. So this is the sequence you can see, which is following. Do terminal type VT100, build terminal type VT100, do terminal type VT100. इस तरीके से हमारा कुछ सीक्वेंस फॉलो होता है. ठीक है, जो ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ. For this situation and similar situation, the protocol introduces a set of rules. So a parties may only request a change in the option. Second part है, if a party receives a request, enter some mode that is already in. Clear? The request should not be acknowledged. Third one is, if the option affects the way how the data is processed, so the command must be inserted in the data stream exactly in the place where it is desired to take effect. Clear? Someone is asking anything? Okay. इसके बाद देखते हैं ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, द रिजेक्टेड रिक्वेस्ट शुड नॉट बी रिपीटेड until something changes in the operating environment. As an example, the process runs other programs or other user command is executed. So the options are set through telnet commands to indicate that the next byte is a command byte. The IAC, that is the interpreted as command byte, that is this 0xFF is sent. The data byte, that is 0xFF is sent as two consecutive bytes. Clear? So these are some options field, you can say. Now if we talk about the telnet commands, so typically for the telnets, they are terminals directly connected to the computer so that the keystroke by the user are immediately interpreted by the computer's operating system. For the purpose, certain keystroke combinations were invented. For example, by pressing Ctrl plus Z, the processes were suspended, or Ctrl plus C was used for killing current processes. The telnet cannot transmit such codes as they are, since the codes are command containing two keystrokes and do not map to the 7-bit ASCII chart used in the NVT. So this requires that the client has to translate the terminal's control code to the telnet command and transmit the command to the server host operating system. Clear? These are some telnet command. So you can see these are the commands with the name and code with the description also. EOF exactly is 236 code is there for EOF. इसका डिस्क्रिप्शन है एंड ऑफ फाइल. क्लियर? तो जब ये कमांड आपकी सेंड हो रही होगी तो इसका मतलब है एंड ऑफ फाइल, आपको मतलब जो भी फाइल है इसका एंड आ गया, एंड ऑफ द फाइल. क्लियर? जो सेंड कर रहे हैं आप.
SUSP का मतलब है सस्पेंड प्रोसेस, abort का मतलब abort प्रोसेस, तो सबके लिए कोड अलग अलग है, आप देख सकते हैं। EOR is what, end of record, SE is सब ऑप्शन एंड, क्लियर। इसके बाद NOP है नो ऑपरेशन, DM is the data mark, BRK is a break, IP is interrupt process and so things। so ये जितने भी हमारे आप देख सकते हैं सब कमांड्स हैं that are utilized for this, clear। now if we talk about the telnet for client server applications, so telnet can be used as tool set to build the client server application as a basis for the application. Telnet rarely requires the terminal extensions and the negotiation, but the telnet operates in the basic NVT mode, that is the network virtual terminal। so basic NVT mode में हमारा telnet operate होता है। so NVT exactly is what, is a bidirectional hot duplex device which contains a terminal and a keyboard। NVT is a what, NVT is a bidirectional half duplex device which exactly contains a terminal and a keyboard। so basically the keyboard is the user keyboard. The keyboard produces client's outgoing data sent over the telnet connection to the server। जो भी आप outgoing data भेज रहे हैं through the keyboard, it is sending here to the server end, and the printers is the user's display where the telnet server and the characters here। so NVT is half duplex, this means that in the telnet protocol either the client or the server has the control, clear। so the control from the client to the server is changed by CR/LF, clear। the server uses the CR/LF for changing the line, not for returning, clear। so the control to the client, so the client receives the control after receiving the data from the server, accepting the go ahead, just wait, okay, so accepting the go ahead control code, yeah। Class, am I audible now? Is there any issue with the voice? No, sir. Okay, actually, due to some network issue, the voice was disconnected. Okay, so now we are again connected. So these are some telnet for client server applications. So now we have telnet and security, clear. So if you talk about the telnet and security, since the eavesdropping and the snooping are easy to implement to any machine connected to a LAN, and the fact that the password and the user IDs are sent through the telnet connection unencrypted। एग्जैक्टली क्या है कि जैसे हमने अभी आपको बताया है कि इसमें कोई भी एंड डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। मतलब एग्जैक्टली यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड सो मेनी। सो एग्जैक्टली जो सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे आपको पता है क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि जैसे अगर कोई डेटा सेंड हो रहा है, देन इन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एनी एक्सटर्नल पर्सन beyond other than for your respective sender and receiver, it can just take the data in between sender and receiver and modify it
the content of that particular data, or you can say it can just rename, or you can say rename the data, or you can say some modification may done into the data or file. Clear? Also, it may delete the content of data, and so many other modifications are there, and some it may produce their own data and just replaces the original data. So these are some image dropping and the snoopings that are done into the transmission. Clear? So जैसे पासवर्ड हो गया, यूजर आईडी हो गया, जो भी सेंड करेंगे टेलनेट के थ्रू, so that may have the connection that is unencrypted, so if not otherwise required. So the telnet protocol is a security risk. Clear? Therefore the telnet protocol, क्योंकि आप remote server से जब connect होंगे, you will send your user ID and password to access that particular computer. Clear? So this protocol basically defines the option for the authentication. So the actual authentication is exchanged in the authentication sub-negotiation. So the telnet's authentication option supports such authentication standard like Kerberos, SPX, RSA, Lockheed and SSA. Yes, so ये हमारे कुछ telnet and security issues हैं जो कि हम लोग telnet में overcome कर सकते हैं. Yeah. Then now we have another topic, that is DSCP protocol. I am just sharing you the file. Just wait. Have anyone heard about DSCP protocol? Have anyone heard about DSCP protocol earlier? किसी ने सुना है? Class. Have anyone heard about DSCP protocol? Class. Is there anyone who want to respond? सर नहीं सुना. Okay. DSCP exactly is what? Dynamic host configuration protocol. जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, this is a dynamic host configuration protocol. Clear? इसमें मेन काम क्या होता है कि जैसे जो भी हमारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं. क्लियर? सो जैसे हमें किसी भी सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, तो वी जस्ट रिक्वायर एन आईपी एड्रेस ऑफ दैट. क्लियर? सो हमें आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसमें अगर हमारे पास जो हमारा इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इज जस्ट डायनेमिकली असाइन. क्लियर? just dynamically assign the IP addresses, you can say, to the host that are connected. Clear? So dynamic host configuration मतलब dynamically अगर हमारे पास कई सारे host हैं, so it can assign the IP addresses to them. Clear? So that they can communicate to each other. So अगर हमारे पास कई सारे systems हैं और वो आपस में communicate करना चाहते हैं, so it just dynamically assign the IP address to them. Clear? तो DSCP basically एक temporary IP address assign करता है for a limited period of time. Clear? And it has two databases basically. First one has the static bindings for physical address, that is basically MAC address with IP address. Clear? And the second one has a list of available IP address that may be assigned for a period of time. Clear? So now client request to DSCP server causes server to see if MAC is in static database. If so, assign the static IP entry to client. If no, choose from available pool. So client request a DSCP server basically causes the server to see if the MAC is in static database. If so, assign the static IP entry to the client. If not, choose from the available pool. So assigned addresses are temporary, basically leased base. So जो भी address assign हो रहे हैं वो temporary हैं, जब तक communication करना तभी तक के लिए. When client lease expires, so must renew or stop using. ठीक है? तो जब उसका टाइम ओवर हो जाएगा तो इसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा और उसको यूज करने के लिए यूज आप नहीं कर सकते हैं बिफोर रिन्यूइंग. क्लियर? जब तक का एक टाइम असाइन किया गया है तब तक आप यू कैन एक्सेस बेसिकली. नाउ
we go further. So you can see how the messages are exchanged through DHCP protocol. So we have a client server relation. Client uses basically UDP port, that is 68, and the server uses the 67 UDP port. So this is the port where the communication is done. Clear? So इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हैं. So client exactly access the server initially. Clear? So सबसे पहले तो वो सर्वर को एक्सेस करता है. क्लियर? उसके बाद जब वो देखेगा नाउ सर्वर इज ओपन, पैसिव ओपन, देन इट विल सेंड्स द DHCP discover message. So DHCP discover message will be sent, and that will check that the server is available or not. Clear? So पहले तो चेक करेगा कि सर्वर अवेलेबल है या नहीं है. So it will first send the DHCP discover message. Clear? So जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद जब वो अवेलेबल होगा then it will send the DHCP offer message to the client. So it will send the DHCP offer message. Now it will say that it is available for the accessing of the to the particular node, और जो भी हमारे host हैं उनसे access करने के लिए तैयार है. So clear? So yeah, you can say it will just find the IP address to access that particular server. Clear? So उसके बाद क्या है? Again client will send a DHCP request to the server. एक बार ये हो गया कि हाँ हम दोनों आपस में फ्री हैं कम्युनिकेट करने के लिए, then it will send the DHCP request that is sending from port 68 to the port 67 from client to server. Then server acknowledge with the DHCP acknowledge message to the client again. This is how the message exchanging takes place. एक चीज आपको और ध्यान रखना है, बिफोर 50% ऑफ लीज टाइम एक्सपायर्स, इस तरह से हमारे एक्सचेंजिंग ऑफ मैसेजेस टेक्स प्लेस. जब 50% हमारा टाइम ओवर होने वाला होता है लीज टाइम एक्सपायर होने से पहले, द कम्युनिकेशन इज लाइक दैट. मींस DHCP रिक्वेस्ट भेजा जाएगा UDP सर्वर के मतलब सर्वर के पास थ्रू यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. इफ द सर्वर डज नॉट रिस्पॉन्ड, द रिक्वेस्ट इज रिपीटेड. ठीक है, जैसे मान लीजिए रिक्वेस्ट भेजा क्लाइंट ने सर्वर को, ठीक है, टाइम लीज होने से पहले, बिफोर द टाइम लीज एक्सपायर्ड. क्लियर? तो उसने सर्वर को भेजा और अगर मान लीजिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा. तो इट विल अगेन सेंड द DHCP रिक्वेस्ट टू द सर्वर. इफ द सर्वर रिस्पॉन्ड्स विथ ए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, द क्लाइंट मस्ट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. ठीक है, अगर वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है तो वो फिर से स्टार्ट करेगा. ठीक है ना? एंड इसके बाद देखिए आप क्लाइंट को अगर मान लीजिए सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया विद नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, दैट इज DHCP नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट. इफ द सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद एन एक्नॉलेजमेंट, द क्लाइंट हैज ए न्यू लीज. क्लाइंट के पास एक न्यू लीज आ गया क्योंकि एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ गया. देन क्लाइंट अगेन find the DHCP acknowledgement from the server, and then the client will initiate the DHCP release request for the server. सर्वर पे भेजेगा to release the request, मतलब रिलीज करने के लिए कनेक्शन को. तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है. सो द क्लाइंट ब्रॉडकास्ट ऑन, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है क्लाइंट जो भेज रहा है, देख सकते हैं आप 255.255.255.250. ये ब्रॉडकास्ट है, मतलब सभी को रिसीव हो रहा है. ठीक है, नेवी सर्वर. तो क्लाइंट ब्रॉडकास्ट ऑन दिस पर्टिकुलर एड्रेस, IP एड्रेस, ए DHCP डिस्कवर मैसेज यूजिंग डेस्टिनेशन सर्वर पोर्ट 67. तो डेस्टिनेशन जो सर्वर पोर्ट है 67 पे ये ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज. नाउ सर्वर्स रिस्पॉन्ड विद DHCP ऑफर मैसेज. सर्वर रिस्पॉन्ड करेंगे DHCP ऑफर मैसेज से. ठीक है, कि अब आप ऑफर कर सकते हैं. इट कंटेन द IP एड्रेस ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ द लीज विच बाय डिफॉल्ट इज 1 आवर. तो जो भी ऑफर आएगा, ऑफर मैसेज, उसमें आपका क्या क्या चीज रहता है, IP एड्रेस रहता है जो कि पर्टिकुलर क्लाइंट को असाइन किया जाता है. ठीक है, IP एड्रेस जब उसको असाइन हो जाएगा तभी कम्युनिकेट कर पाएगा. तो सर्वर भी असाइन द IP एड्रेस टू द क्लाइंट
with the help of DSCP offer message. Also, the duration of lease. Lease duration is also provided, which by default is 1 hour. 1 घंटे का लीज ड्यूरेशन होता है, 1 घंटे के लिए आप अवेलेबल रहेंगे कम्युनिकेशन के लिए. But beyond 1 hour, the connection will be either reconnected or it should be terminated. Clear? So if the client does not receive a DSCP offer, attempts again up to 4 more attempts in 2-second intervals. अगर उसको कोई ऑफर नहीं मिलता है, मतलब कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो वो री अटेम्प्ट करेगा 2-2 सेकंड के इंटरवल पे 4 बार. ठीक है. एंड वेट्स 5 मिनट टू ट्राई अगेन. ठीक है. It will be just wait for the 5 minutes to try again. Client choose one of the offers and sends DSCP request to the selected server. ठीक है. कोई भी एक ऑफर को क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा and send the DSCP request to the selected server. Server responds with DSCP acknowledge and creates a binding between MAC address and the IP address offered. So clients has right to that IP address until lease expired. Clear? At the 50% जब mapping हो जाएगी MAC address and IP address की, then the client has the right to the IP address until it lease expires. Clear? At the 50% of the lease period expiration time, client sends a DSCP request to the request renewal. अगर वो फर्दर कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा जो भी उसकी रिक्वेस्ट है. Clear? After 50% of the lease period expire. Clear? So it just sent the DSCP request for the renewal. Clear? So if server respond with a DSCP acknowledgement, it means client is good to go and resets client timer. If server denies request with DSCP negative acknowledgement, client must immediately stop using the IP address and try to find another server. Here, because we have another servers that are also available. So it just wait for another server to respond. Clear? Because that particular server has stopped the accessing. Clear? By sending the negative acknowledge. If no server responds with anything in step 6, the client sends another DSCP request at 87.5% time of the original lease. अगर कोई सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक है, तो क्लाइंट क्या करेगा, another DSCP request भेजेगा at 87.5% time of the original lease. 50% के बाद वो सेकंड 87.5% तक दोबारा भेजेगा. If no server responds, then client uses IP until lease time expires and then start from scratch. So the client send DSCP release message to the main server. वो release message भेज के एक तरह से उसको end कर देगा. ठीक है ना? So this is how the process may done. So you can say this is the DSCP transition diagram. So how the transition takes place. So we have a initialization, then selecting, then requesting, then bound, then rebindings and renewing of the message also there. You can say they are connected with the DSCP acknowledge message. Here, this is the how the processing may done. So you can see this is the processing basically. So in this way the processing is happening. Here, initialization, then selecting. Selecting is what? That is the DSCP offer message. Then requesting means DSCP request message, then bound means DSCP acknowledge message, and then it is going again if the lease time 50% expire, then DSCP request message again going to for the renewal purpose, and if it is getting the DSCP acknowledgement, then it will again bound, and otherwise it will rebind after the lease time, that is 87% is expired, is again rebind with negative acknowledgement. So lease time will get expired. So it is just showing by the dot line, mean the time has been expired. We have a lease cancelled also, that is DSCP release here. This is how the transition takes place. This is how exactly your you can see. This is the diagram for the header format, you can say. So it is operation code, hardware type, hardware length, hop count, and transaction ID is there.
then number of seconds, then speed is there, the client IP address, then your IP address, server IP address, gateway's IP address. Then we have a client hardware address that is 16 byte, then server name of 64 byte, then boot file name of 128 bytes, and options that is variable length here. So if you talk about the DSCP packet details, these are the packet details like operation codes. It is 1 byte field. Define types of DSCP packet. The request is equal to 1, reply is equal to 2. These are the operation code for 1 byte field here. इसके बाद हार्डवेयर टाइप की बात करें तो दिस इज आल्सो 1 बाइट फील्ड डिफाइनिंग फिजिकल नेटवर्क. जैसे कि ईथरनेट है तो दिस इज हैविंग द 1 कोड. If I talk about the hardware length, so 1 byte field is specifying the length. Clear? So all of you are getting my point, what I am saying? Hello? Class? Yes, sir. Yes, sir. So all of you are also requested to kindly mark your attendance into the chat box. Okay. Then we have a transaction ID here. So in transaction ID is what? 4 byte field that is used by the client to make secure server that is talking to this client, and not another simultaneous request responses are there. Where then we have a number of seconds. So 2 byte field is there for number of seconds since client becomes alive. Flag की बात करें तो 1 bit flag allows client to force server. Flag आप देख सकते हैं. We have a flag also. In the previous slide we have a flag here over here. ठीक है. So we have a flag also. So flag is what? It is a 1 byte flag, allows client to force server to broadcast reply instead of sending reply to a specific IP address. If the client does not know its IP address yet, so it wants a broadcast reply from server. Then we talk about the client IP address. So 4 byte field of client IP address is there. So if unknown is 0, okay? Your IP address, so it is a 4 byte field, server fills into the tell client the client's IP address. Server IP address की बात करें, it is again 4 byte field. Here, gateway IP address is also 4 byte field. Client hardware address, in our case 6 byte Ethernet MAC of client sending here. तो ये हमारे कुछ उससे रिलेट जो भी हमारा पैकेट फॉर्मेट था उससे रिलेटेड हमारे कुछ ऑपरेशन कोड थे एंड एड्रेसेस थे जो भी हमने अभी पीछे देखा था. ये दिस इज द पैकेट फॉर्मेट बेसिकली. नाउ DSCP पैकेट्स के अंदर ही हमारा सर्वर नेम भी आता है, बूट फाइल नेम भी आता है. ठीक है. दिस इज ऑप्शनल. बेसिकली 128 बाइट फील्ड इज यूज्ड फॉर द बूट फाइल बेसिकली. क्लियर? सो बूट पी बेसिकली ये हमारा यूज करते हैं जैसे कि प्रोटोकॉल दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ DSCP. बूट पी हम लोग यूज करते हैं फॉर बूट फाइल नेम के लिए. तो DCP is a backward compatible with bootp, that is bootstrap protocol provided IP address, subnet mask and IP address of a router, IP address of a name server to the diskless computer. Then we have option field, you can see here. So ये आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी हमारे पास टैग है, लेंथ है, वैल्यूज हैं, सबके अलग अलग दिए हुए. टैग वैसे 53, लेंथ इज 1, देन वैल्यू सबके दिए हुए. वैल्यू 1 पे हमारा DSCP डिस्कवर है, 2 पे DSCP ऑफर है, 3 पे DSCP रिक्वेस्ट है, 4 पे DSCP डिक्लाइन है, 5 पे DSCP एक्नॉलेज है, 6 पे नेगेटिव एक्नॉलेज है, देन रिलीज है 7 पे. इस तरीके से हमारा वेरी करता है. And few more important options values like pad, subnet mask, gateways, domain server, and end. The meaning given है. So is there any issue with the DSCP and telnet? Class, is there any issue to someone with DSCP and telnet basically? Class, किसी को कोई problem? Gopal Pandey, is there any issue?
Okay, so